This is some real world news that just happened today. I am very interested to see what comes out of this. Justin Trudeau resigns. The end of Justin Trudeau in Canada. Is Canada about to become the 51st state of the United States? So finally, जिस We'll बात do की that one आशंका next. थी ये हो ही गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। खत्म, टाटा गुड बाय। दिस इज राइट नाउ दी Yeah, you think Canada is going to become the 51st state? Dude, I kind of think so too. Because most of Canada already lives with like lower than what the United States is. There's places in the United States that reach up higher than Canada than where most people in Canada live. It's insane. एंड ऑफ जस्टिन ट्रूडो। हालांकि मैं ये बोलूंगा, इनका जो स्पीच है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इमोशनल स्पीच उन्होंने Exactly. दिया है। Exactly. जाने से पहले लिटरली स्पीच के दौरान इनके मुंह से शब्द निकल North America? Nah, that's just America. Fuck yeah. Next is Mexico. गए, आई एम ए फाइटर, मैं फाइटर हूँ। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि पुष्पा वाला वो जो भी होता है वो करके दिखाएंगे, बट जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे स्पीच में बार बार ये बात दोहराई कि इनका ये अंत नहीं है, ये रिजाइन कर रहे हैं मगर ये लड़ते रहेंगे। He's still the prime minister until the 24th. And then the what? The 25th? He's the governor of the great state of Canada? और ये हो सकता है वापस भी आ जाए, बट Do we break it up? Do we get like a couple different states? Can we like separate Toronto and Quebec? अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क ने जो प्रेडिक्शन करी थी जस्टिन ट्रूडो के बारे में, ये 100% करेक्ट होती हुई दिख रही है। इलॉन मस्क ने कुछ ही हफ्तों पहले कह दिया था कि देखिए जस्टिन ट्रूडो एक इनसफरेबल टूल है और बहुत ही जल्द ये हट जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि इलॉन मस्क बहुत खुश हैं। किसी ने ट्वीट करी सोशल मीडिया, Trump won. Trudeau resigns. Stromer got exposed. Bucko cut crime by 95% in El Salvador. Javier Milei created the first surplus in Argentina since 2008. Masculinity, being a man, is great again. Great men are ascending. This is such a great time to be alive. And that's what I'm saying. There's only one way to do things, and it is the right way. And it may feel like it doesn't get rewarded in the short term, but I promise you, in the long term, it will work itself out. The universe always does. पे कि रिसेंटली देखो ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, कियर स्टारमर यूके के Not Mexico. It's mostly liberal. Oh, don't worry. Don't worry. प्रधानमंत्री ये एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं, इलॉन मस्क पीछे पड़े हैं यूके के पीएम के, उनको भी रिजाइन करवाना चाहते हैं ये। एल सल्वाडोर में राइट विंग गवर्नमेंट आ गई, अर्जेंटीना में जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं ये सभी चीजें देखकर इनको काफी अच्छा लगा। 2025 लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क। और इधर आप देख पाओगे ये है जस्टिन ट्रूडो की रेजिग्नेशन वीडियो। वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, इससे पता लगता है कि ये कितने ज्यादा प्रेशर में थे। एंड ही मैच्ड अप बैडली। नाउ ये I love see this. I love learning from all these different cultures, all different perspectives, because I know America only has a very limited worldview. So it's so funny to, I guess, kind of have my own farts like affirmated, like that my like kind of self whatever of like India also thinks that Canada and Trudeau sucks. सुनिए इनकी ये स्टेटमेंट। Mostly illegal immigrants from Mexico. Not really mostly, because a lot of them came from like China, Turkey, a couple other places. But yeah, Mexico and South America as a whole has an immigration problem. However, Mexico did say that they're willing to take them back. Holidays. I don't think that was too much of an option. Trump's just like, you can either say you're going to take them back or not, but guess what? You're gonna get them back. I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign. The Mexican government needs to work on itself. Yeah. As a part of being the lower 52 of the United States of America. America government can do it. I'm telling you, we could put some, hell, we'll find another, I don't know, Elon, another Vivek. We'll send them down there. They'll straighten it out. As party leader, as prime minister, after the party selects I'm partly kidding. Partly. its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Respectfully, what I would like to see out of Mexico,
and even Canada, really. I don't want us to become a part of the United States in a sense. I would like to see good leaders that want to do the sake of good, of doing good for the sake of humanity, because competition ultimately is a good thing. And a monopoly is not a good thing, right? So if America just becomes a monopoly of the world, I think that's a bad thing. And I think it would take away the culture of Canada, the culture of South America, which is a very beautiful and bright culture. I would like to see young leaders who are doing good for the sake of good get into positions of power and let competition work itself out. सो बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, ना सिर्फ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये लिबरल पार्टी जो है कनाडा में, जो मेन आप कह लीजिए पार्टी है आज के समय कनाडा में, उसके लीडर भी थे। लिबरल पार्टी के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो को लेकर इतना ज़्यादा असमंजस था, जो लीडर से जो बाकी एमपी थे वो इनको लेकर इतना ज़्यादा Yeah, अनकंफर्टेबल फील कर monopoly is रहे never थे good. कि सबके दबाव की वजह से इनको यहाँ पर रिजाइन करना पड़ रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, मैं एक रीजन गिनवा नहीं सकता। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशंस बिना बात पे खराब किए, ये एक बड़ा रीजन है। कनेडियंस को समझ नहीं आया कि आखिर जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहे हैं। और वहां पर देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, एजुकेटेड जनता है, वो समझ जाती है कि एक नेता किस तरीके से एक कंट्री को टारगेट करके बस ध्यान भटकाना चाहता है। तो जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे थे इंडिया को टारगेट करके बाकी जगह अपनी कमियां छुपाना, नो वन बॉट दैट। उल्टा मैं कहूंगा कि इंडिया के अगेंस्ट जो इनके एक्शंस थे, इससे ओवरऑल इनकी पॉपुलैरिटी गिरी ही है। फिर उसके अलावा आप अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, देखिए कोई छोटी बात नहीं होती, कैनेडियंस को मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आ जाओ हमारे देश का हिस्सा बन जाओ, अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैं क्या बुलाता हूँ, गवर्नर। Say, we are the greatest. Come be a part of a winning team. Trudeau sucks. He sucks. America is great. और तुम्हारे पूरे देश को मैं बुलाता हूँ एक स्टेट। ह्यूमिलिएटिंग होता है कंट्री के लिए, चाहे वो ओपनली ये बात एक्सेप्ट ना करे, बट इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। और ट्रंप साथ में Yeah, become a part of the upper 51. ये भी कह रहे हैं कि 25% के टैरिफ भी लगाऊंगा कनाडा पे, जिससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स को झटका लगने वाला है। साथ ही साथ और जगह भी आप देख लीजिए, कनाडा की इकोनॉमी, जो यहाँ पर रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, हर जगह जस्टिन ट्रूडो ने लॉस ही हासिल करी है, कहीं भी ये जीत नहीं पाए हैं। एक Doctor, is there a specific video on the Indo-Canadian relations that you want me to react to, especially if so? Drop it in the Discord. उन्होंने डेस्परेशन में कोशिश करी थी कि इंडिया को ब्लेम करके कुछ हीरो बन जाता हूं और अपने कंट्री में दिखाऊंगा कि मैं अपने कंट्री के लिए खड़ा होता हूं। वो जो इनका आखिरी गैम्बल था वो भी फेल कर गया, एंड नाउ ही हैज टू रिजाइन। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, और क्या कनाडा में अब इलेक्शंस होंगे। देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, कनाडा 2025 में G7 समिट होस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा अजीब होता अगर जस्टिन ट्रूडो, जिसके बारे में भारत सरकार ओपनली कह चुकी है कि ये आदमी अकेला रिस्पॉन्सिबल है कनाडा इंडिया रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में। Whoa! Justin Trudeau is responsible for destroying Canadian-Indian relations? Doctor, you may be onto something. तो बहुत अजीब होता कि पीएम Not Mexico, because it will not assimilate with the USA and their outlaws, and it will change the chances of winning for Republicans because of 1/3 of the population of the US. Honestly, Geek, I feel like if Mexico came in and became a part of the United States government, the government then would have all the tools and necessities and the resources and the green lights to get rid of some of that crime, and they can go in there and legitimately just evaporate the cartel because they're on American land now. It's a lot easier to deal with bad guys when they're on your backyard than when they're in somebody else's backyard. But what's more, I don't know if I would even want America to take Mexico. I think I would want South America, Mexico, all of that to keep its independence and keep its culture and allow good, young, once more, leaders to get into positions of power and do good for their community and allow competition, allow the cream of the crop to rise. मोदी जाते कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर इनको वेलकम करते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आई थिंक इंडिया की जो पार्टिसिपेशन होगी 2025 के G7 समिट में, इसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। और अब पॉसिबिलिटी मैं काफ़ी हद तक कहूँगा ये भी है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस धीरे धीरे अब रिपेयर भी हो। What is that, Now, Mexico मुझको City? एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, कनाडा Cancun? में इलेक्शंस इमीडिएटली नहीं होंगे। कनाडा के जो इलेक्शंस हैं ये शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर 20, 2025 में। तो अभी अक्टूबर महीने में यहाँ पे चुनाव होंगे। वहाँ पर अगर पियर पोलिवियर अगर जीत जाते हैं तो आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर इन So ideally we want Pierre to win. We want this guy right over here to win. It'd be a good thing for India and Canadian relations. इलेक्शंस में कहीं
I do think India is going to be a superpower in the next 10 to 20 years. So I think whatever you could do to make good relationships with India, you probably should do that. से कुछ जादू करके जस्टिन ट्रूडो फिर से पावर में आ गए, तो मैं कहूंगा एक बार को इनका जो यहाँ पे सेंटेंस है, आई एम ए फाइटर, ये सच साबित होगा। बट अभी के लिए लगता नहीं है I'm a fighter as they step out of the ring. कि 2025 के चुनावों में ये जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी ही इन पर भरोसा नहीं करती। अब होगा क्या कि कनाडा में जो लिबरल पार्टी है, जो अभी पावर में है, वही लोग, वही पार्टी अपनी पार्टी Yeah, में से right? एक Like आदमी what? को कनाडा का प्रधानमंत्री बनाएगी, और ये पीएम आपको दिखेगा मार्च 24 में। जी हाँ, अभी भी मार्च 24 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहेंगे जस्टिन ट्रूडो। What's the chances? Well, go ahead and let's clip this. Let's go back. At the end of the year, this time next year, Canada may be a part of the United States. The tone and the inflection I'm getting from this video, I think it's more likely that Canada becomes a part of the United States than it doesn't. That's हालांकि insane. अब ये बस पपेट पीएम रहेंगे, वेट कर रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है Always wanted to go to Toronto. इंटरनली डिसाइड करे कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। और वैसे कनाडा का जो पार्लियामेंट सेशन है, इसी महीने ओपन होना था। जस्टिन ट्रूडो ने रिक्वेस्ट करके जो ये सेशन है, ये मार्च के महीने में करवा दिया है। तो कुछ महीनों तक जस्टिन ट्रूडो आपको दिखेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मगर अब मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक सची हो चुका है। पीएम ना रहे, ये गवर्नर सही रह गए हैं, और हिज करियर सीम्स टू बी ओवर अनलेस मैं कहूंगा कोई बहुत ही बड़ा इवेंट ना हो 30% until Trump does something crazy. So you think there's a 30% chance? Okay, I'm putting it at like 51% chance. जाए कनाडा में। अभी के लिए लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो बहुत ही लंबे समय तक पावर से दूर रहने वाले हैं, एंड दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और आई थिंक इससे यूएस कनाडा रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। बाकी वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के इमीडिएटली जाने से जो भी वीजा के इशू थे, स्टूडेंट्स के इशू थे, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, उसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं, क्योंकि पार्टी वही लिबरल पार्टी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कहूँगा अक्टूबर 2025 तक का वेट करिए। आई थिंक इंडिया कनाडा रिलेशंस कैन रिपेयर अ लॉट। और फाइनली मैं यहाँ पर यही पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या सोचते हैं? लिखेगा इनके बारे में, सिंस अब ही इज नो लॉन्गर द पीएम ऑफ कनाडा, लंबे समय तक कनाडा के पीएम रहे थे। बताइए व्हाट यू थिंक ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इनकी ओवरऑल टेन्योर। Honestly, I think this may sound crazy, but for India-Canadian relationships, it may be best for Canada to drop the Canadian and pick up the American, because America and India seemingly has a great relationship. And now with Trump getting back into office, putting Vivek in, putting Kash Patel in, putting all these different Indians in positions of power, whether it be in politics, whether it be in, just mainstream businesses like with Microsoft and Google, all these other companies. I think the partnership between America and India is only going. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.